National Herald is a product of the freedom movement of India. It was founded by eminent freedom fighters such as Purushottam Das Tandon, Acharya Narendra Dev, Rafi Ahmad Kidwai, and Jawaharlal Nehru. National Herald, Navjeevan, and Qaumi Azad are the symbols of the freedom struggle. And if I may humbly submit, it is a duty of every Indian to preserve and cherish these symbols. National Herald is owned by Associated Journals Limited, a company registered in 1937-38. It is a public limited company. AJL, Associated Journals Limited, holds 6 immovable properties in India. The property in Lucknow alone is a freehold property. The other properties in Delhi, Panchkula, Mumbai, Patna, and Indore are leasehold properties allotted by the government concerned with the condition that the property cannot be sold. Over time, AJL incurred huge losses. AJL and National Herald could not pay the taxes, statutory dues, or wages and salaries. The outstanding liabilities of AJL were huge and mounting. Between 2002 and 2011, the Congress party stepped in and advanced money in small tranches by checks amounting to rupees 90 crore. The monies were used to pay the outstanding liabilities, including wages and salaries. AJL was a debt-laden company. On legal advice, it was decided to restructure the company. In 2010, a new company, Young India, was formed as a not-for-profit company under Section 25 of the Companies Act. I repeat, Young Indian is a not-for-profit company under Section 25 of the Companies Act. In the new Act, it is Section 8. If you wish, at the end of my statement, I will read to you old Section 25 of the Companies Act. Young Indian had 4 shareholders, only 4 shareholders, all of them senior office bearers of the Congress party. Young Indian took over the 90 crore loan advanced by the Congress party to AJL after paying a consideration of rupees 50 lakhs. Thereafter, Young Indian became the lender of AJL. Since the loan was irrecoverable from AJL, it was decided by the 2 companies that the loan will be converted into equity, and accordingly, equity shares were issued by AJL to Young India. Conversion of debt into equity is a well-known instrument of restructuring companies. Banks do it regularly. Let me repeat, banks convert loan into equity regularly. Recently, the Government of India converted the liability of rupees 36,000 crore. I repeat, 36,000 crore rupees owed by Vodafone India to the Government of India into equity.
government was the lender. It was owed 36,000 crore. That loan of 36,000 crore was converted into equity, and the Government of India's equity in Vodafone India is now 48.99%, almost 49%. As I said, Young Indian is a not-for-profit company. Even if it made profits, it does not make profits. Even if it made profits under Section 25 of the old Act and now Section 8 of the new Act, it cannot, I repeat, it cannot give or distribute salaries or dividends to its shareholders. Since incorporation, not a single rupee has been paid by Young Indian to its directors or shareholders. I repeat, since incorporation, not a single rupee has been paid by Young Indian to its directors or shareholders. The Income Tax Department has valued the property of AJL at rupees 413 crore, 413 crore. In 2013, an individual complainant, repeat, an individual complainant lodged a private complaint against the directors of Young Indian alleging cheating, conspiracy, etc. At the stage of cross-examination of the complainant himself filed an appeal in or about 2020 to the High Court, Delhi, and obtained a stay of further proceedings in the trial court. Hence, effectively, the criminal case is stayed since 2020. I repeat, the complainant himself filed an appeal to the High Court and got a stay of the trial of the case. In 2023, the ED registered a case under PMLA, presumably based on the criminal case started on a private complaint pending before the trial court. ED has filed a complaint, commonly known as charge sheet, under PMLA on 9th of April 2025. That is only 11 days ago, 9th of April 2025. But I understand the complaint has not been made public. If any of you has received the complaint, I'll be happy to know what the complaint says. AJL now publishes the 3 newspapers online. AJL also hosts a number of websites and social media platforms. AJL's media outlets have a vast digital presence. These are the facts. Where is the crime? Where are the proceeds of crime? Where is the tainted money? Where is the offense of money laundering? नेशनल हेरल्ड बांग्लादेश के सामने मौजूद प्रदर्शनों से जनता का ध्यान भटकाने और देश को गुमराह करने के लिए भाजपा की साजिश, जो कि सरासर एक राजनीतिक प्रतिशोध। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र कुछ नहीं बल्कि एक गैर मौजूद मामले के जरिए जनता का ध्यान बेरोजगारी, गिरती जीडीपी और सामाजिक अशांति से भटकाने, जनता को भ्रमित करने और बरगलाने के लिए गढ़ा गया एक सरासर झूठ है। आर्थिक संकट, लोगों के मुद्दों और विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों, अमेरिका, चीन और बांग्लादेश से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। यह कानूनी पेश में प्रतिशोध के अलावा कुछ और नहीं है। पहली बार
बिना पैसे या 1 मिलीमीटर संपत्ति के हस्तांतरण की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाया गया। अपराध की आय बता रहे कहां, कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जब पैसा ही नहीं है तो लॉन्ड्रिंग या अपराध कहां से आ जाता है। अगर कोई कंपनी कर से छुटकारा पाना चाहती है तो वह एक नई कंपनी बनाती है और उस कर्ज को नई कंपनी में ट्रांसफर करती है। कंपनी कानून के मुताबिक ये कानूनी है और ये अक्सर आप देखते हैं ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। जब पैसा ही नहीं तो लॉन्ड्रिंग कहा, अगर कोई अपराध हुआ है तो वह 2 मास्टरमाइंड्स ने किया है। 2 मास्टरमाइंड्स आप समझ सकते हैं कौन? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह। चुनिंदा न्याय कुछ और नहीं बल्कि राजनीतिक ठगी। ईडी को जवाब देना चाहिए कि एजेंसी ने एनडीए के किसी सहयोगी या भाजपा के नेता को क्यों नहीं आज तक छुआ है। ये लोग तो मीडिया को पूछना चाहिए ये बात कि क्या कारण है कि ईडी कभी किसी भाजपा के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए या कोई मामला ही नहीं कभी उठा पाए। सरकार ने ईडी को अपना चुनाव विभाग बना लिया है और बदले की भावना से इसका बार बार दुरुपयोग कर रही है। ईडी के मामलों में सजा केवल 1%, केवल 1%। और जो मामले दर्ज किए जाते हैं, जो ईडी मामले उठा रही है, 98%, 98% ये जो सत्ता पक्ष है उनके राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ईडी के केस 98%। ये बदले की राजनीति, धमकी, उत्पीड़न और भय फैलाने की एक राजनीति जो आपराधिक मानसिकता वाले 2 लोगों के इशारों पर की जा रही है। वे हमें कितना भी चुप करने की कोशिश करें, हम चुप नहीं होंगे। जो दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं ये साफ जाहिर है कि खुद कहीं ना कहीं कमजोर हैं और डरते हैं। मेक इन इंडिया विफल हो चुका है, इसलिए अब वे फेक इन इंडिया की कोशिश कर रहे हैं। अपनी घोर विफलताओं को छिपाने के लिए ये झूठी कहानी मढ़ी जा रही है। ये एक राजनीतिक साजिश है और कांग्रेस पार्टी इसका डट कर सामना करेगी। नेशनल हेरल्ड के बारे में कुछ तथ्य आपके सामने मैं जरूर रखना चाहूँ। 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म शासन से लड़ने के लिए एक उपकरण के रूप में नेशनल हेरल्ड अखबार शुरू किया था 1937, जिसके हिंदी और उर्दू संस्करण नवजीवन और कौमी आवाज शीर्षक से प्रकाशित होते हैं। इस अखबार के पीछे दूरदर्शी महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव और रफी अहमद किदवई थे। अंग्रेजों को इस अखबार से इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेरल्ड पर बैन लगाया था और ये बैन 1945 तक चला। अखबार का प्रबंधन करने के लिए 1937-38 में एक गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) का गठन किया गया था। ऐसी कंपनी लाभांश वितरित नहीं करती है, वेतन नहीं दे सकती या शेयर धारकों के लिए लाभ नहीं कमा सकती। ये एक कैरेक्टर है इस कंपनी का।